आज मैं बनाऊंगी कटोरी चाट और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और क्योंकि आजकल बारिश भी बहुत हो रही है बाहर और जैसे मेरा स्कूल भी ख़त्म हो गया, मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, मेरे 4 GPA आए और तो मुझे कुछ स्पेशल करना था, तो इसलिए मैं ये ट्रेंडिंग रेसिपी कर रही हूँ कटोरी चाट की। Hey guys, what's up and welcome back to your video. Today I'm going to be doing a trending recipe with a twist. Today we're going to be making Katori Chaat, especially because outside it's raining, school's over for me, I got really good grades, I got 4 GPA, and I just wanted to do something special and trending, so today I'm doing the Katori Chaat. Let's get right into it. इस रेसिपी के लिए पहले हम अपनी डो बनाएंगे. So for this recipe first we're going to make our dough और इसके लिए हमें चाहिए 2 कप all purpose flour मतलब मैदा. We need 2 cups of all purpose flour, 2.5 tablespoon oil, 2.5 tablespoon तेल, आधा कप थोड़ा गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, half cup of lukewarm water और 1 teaspoon salt, 1 teaspoon नमक. और हम पहले क्या करेंगे कि सारी जो चीज़ें बताई है हम मिक्स करेंगे together और जैसे जब वो डो बन जाएगा हम उसको निकाल लेंगे. And now what I'm going to do is I'm just going to mix everything together in my bowl over here until it's well combined, and so we'll form our dough then. So the salt and the water in, हमारा salt और पानी अंदर है. अब हमारा oil, now the oil. और अब मैं पहले अपने whisk से इसको mix करूँगी. Now first I'm gonna mix this using my whisk over here और फिर मैं अपने hand से glove के साथ करूँगी. Then I'm going to move on to my glove. So मैंने glove पहन लिया, I've worn the glove और अब मैं इसको whisk से dough निकालूँगी जिसके अंदर है. I'm just going to take the dough out of the whisk और मैं इसको हाथ से मिक्स करेंगे. And I'm just gonna knead this with my hand. और फिर हम इसको अपने मिक्सर में डालेंगे. Then we'll put this into our mixer. अब हमारा ये डो मिक्स हो गया हाथ से और मैं अपने मिक्सर में डालूंगी. So now that dough is done with mixing with our hand, I'm gonna put it into my mixer. और हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि डो like form में आ जाए. And we're gonna mix this until the consistency is dough like. मैं इसको ऑन करूँ and I'm just going to turn it on. और अब ये डो बनी शुरू हो गया. Now we're just going to let it mix. अब जैसा आप देख सकते हैं हमारी डो हो गई है तैयार. Now as you can see our dough is ready और मैं अपने डो को निकालूंगी. I'm just going to take my dough out. तो जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया है और जैसे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल डो की तरह, and like you can see the consistency is just like a dough. और अब मैं अपना दूसरा glove पहनूँ and I'm just gonna wear my other glove. और अब हम इसको एक ball shape में करेंगे. Now I'm just gonna make this into a ball shape and then I'm going to rest it for 5 minutes. और अब मैं इसको बस एक जैसे roll करूँगी. तो जैसा आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है और ऐसे हमें चाहिए. And that's just the way you want it. You want it to be just like a dough. और अब मैं अपने कॉर्नफ्लावर्स को ऊपर रखूँगी and now I'm just gonna rest it for 5 minutes. अब 5 minutes के बाद हम अपने डो को roll out कर सकते हैं. So now after 5 minutes we're gonna roll out our dough. और मैं अपने इस डो से 2 बना सकती हूँ, तो मैं आधा को अभी यूज़ कर. So using this amount of dough I can make 2 of the Katori Chaats, but for now I'm just making 1. तो मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसको डो बॉल में करूँगी. I'm just gonna roll it out in dough ball और फिर मैं अपने wooden surface पे इसको roll करूँगी. And then I'm just gonna roll it out on my wooden surface. तो अभी हमारा हो गया. मैंने बॉल बना के इसको जैसे फ्लैट कर लिया और मैं अपने सरफेस को फ्लावर लगाऊंगी. So I rolled it out and then I flattened it and now I'm just going to flour my surface and I'm going to roll our dough out.
और हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, वी डोंट वांट टू बी टू थिन, मगर हमें जैसे अराउंड क्वार्टर इंच थिकनेस चाहिए, एंड वी वांट टू बी अराउंड अ क्वार्टर इंच ऑफ थिकनेस. तो अब मैं बस इसको रोल अप करूँगी, और हमें इतनी साइज़ की चाहिए ताकि हमारा जो मेरा स्टील का बोल है, प्लेट है, उसके साइज़ को पूरा कवर कर ले. एंड आई एम जस्ट गोना रोल इट आउट सो दैट इट कवर्स ऑल ऑफ द स्टील्स प्लेट. अब हमारा ये रोल हो गया, एज यू कैन सी इट्स रोल्ड आउट नाउ. और अब हम अपने स्टील कटोरी को लेंगे, मगर ये है वो जो मैं ट्विस्ट करेंगे. मैं एक स्टील कटोरी नहीं यूज़ कर रही, मैं एक प्लेट में कर रही हूँ, तो वो ये ट्विस्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. सो फॉर दिस आई एम यूजिंग ए स्टील bowl instead of using a steel plate, so that's the twist for me. और अब मैं अपने डो को इसके ऊपर रखूँगी. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट माई डो, और मैं इसको जैसे नीचे पुश करूँगी ताकि ये फुल जैसे कवर कर दे उसको. एंड आई एम जस्ट गोना पुश इट डाउन सो दैट इट कवर्स. और मैं अपना हाथ को साइड लूँगी और जैसे इसको नीचे पुश करूँगी. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द साइड ऑफ माई हैंड एंड जस्ट लाइक पुश डाउन द एजेस, तो ताकि जैसे फुल उसका साइज़ को जो एग्जैक्ट. तो अब जैसा आप देख सकते हैं ये हो गया है, और मैं टर्न ऑन करूँगी इसको और साइड्स को अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ ताकि वो जैसे सील हो जाए. सो आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम जस्ट टेकिंग द साइड्स एंड लाइक फोल्डिंग देम इनवर्ड्स ऑफ द प्लेट सो दैट इट लाइक काइंड ऑफ सील्स इटसेल्फ. और फिर हम एजेस को काटेंगे नाइफ से. एंड देन आई एम जस्ट गोना कट ऑफ द एजेस यूजिंग माय नाइफ. और ऐसे पूरा इवन भी होएगा साइज़ में, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है. सो एज यू कैन सी दिस इज़ डन. जैसा आप देख सकते हो गया. और बस मैं एक बार इसको पूरा एक जैसे पुश डाउन कर रही हूँ ताकि पूरी सील हो जाए एक बार. और ये पूरा जैसा आप देख सकते पूरा फ्लैट का सरफेस कवर हो गया. लाइक यू कैन सी द होल सरफेस इज़ कवर. और मैं बस इसको एक बार सील कर रही हूँ. और अब मैं अपनी नाइफ़ लूँगी और इसको काटूँगी इसके एजेस को. So I'm just going to take my knife now and like cut off the edges. और उसके लिए मैं अपने edge पे जाऊँगी और जैसे उसको कट करूँगी. Now for that what I'm going to do is I'm just going to go around the edges with my knife and that will just cut itself. और ऐसे हमारा पूरा इक्वल साइज में हो जाएगा. एंड लाइक दिस आवर होल बॉल इज़ 100% इक्वल. और जैसे आप देख सकते हैं पूरा इसका साइज़ हो गया और इसमें हमें होल नहीं चाहिए. तो अब मेरा इधर ऑयल प्री हीटिंग है और मैंने अपना डायरेक्टली बोल के साथ इसको फ्राई पैन में डाल दिया. एंड ओवर हियर आई हैव माई बोल एंड आई जस्ट पुट इट इन फ्राई. और मैंने इसको फ्लिप कर लिया और ये गोल्डन ब्राउन कलर में हो रहा है. और जैसे आप देख सकते हैं उतरने वाला है. लाइक यू कैन सी इट्स ट्राइंग टू कम ऑफ नाउ एंड द गोल्डन ब्राउन कलर इज़ देयर. और अब मैं अडल्ट हेल्प के साथ ये कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड भी कुक हो जाए. सो आई एम यूजिंग अडल्ट हेल्प सो दैट दिस अदर साइड ऑल्सो गेट्स कुक्ड. जैसा आप देख सकते हैं हमारी कटोरी तैयार हो गया. लाइक यू कैन सी आवर शेल इज़ रेडी. और इसमें मेरा हाथ भी बर्न हो गया है, तो मगर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. बट इट्स ओके, इट्स ऑल वर्थ इट. वी गॉट एन अमेजिंग कटोरी हियर. सो अब हम इसकी फिलिंग करते हैं. नाउ लेट्स गेट ऑन विद द फिलिंग. तो फिलिंग के लिए पहले हम अपने चिकपीस डालेंगे, पहले हम अपने चने डालेंगे. सो फर्स्ट फॉर द फिलिंग वी आर गोना बी पुटिंग इन आवर चना. तो मैं ये लूँगी और बस इसको जैसे पूरा फिल कर दूँगी. एंड आई एम जस्ट गोना फिल दिस अप. एंड और फिर मैं अपने चम्मच से इसको जैसे स्प्रेड करी. एंड आई एम जस्ट गोना लाइक स्प्रेड इट अराउंड द होल थिंग. और मैं अपने चने को साइड में रखकर आई एम जस्ट गोना सेट दिस साइड. और अब मैं अपने बॉयल्ड पोटैटो लूँगी. अब मैं अपने बॉयल्ड आलू लूँगी और इसको अंदर रखूँगी. और ये क्यूब में कटा हुआ है एंड दीज आर कट इन क्यूब. और मैं बस जैसे पूरे एयर को जैसे डिस्पर्स कर रही हूँ. और अब मैं अपने अनियंस लूँगी जो मेरे जैसे कटे हुए हैं. एंड आई एम जस्ट गोना टेक माई अनियंस विच आर चॉप्ड एंड लाइक स्प्रिंकल देम एवरीवेयर. और अब मैं डालूँगी
just अपने दूसरा glove finder. I'm just gonna wear my other glove. और मैं अपने डालूंगी अब tomatoes. Now I'm just gonna put the tomatoes on. And मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि जैसे मुझे ज़्यादा टमाटर नहीं पसंद. I don't like tomatoes that much, so that's why I'm not putting too many. But just to give it a little bit color. मैं जैसे ऐसे और अब मैं yogurt डाल रही हूँ, मैं दही डाल रही हूँ now. Or now I'm just putting the yogurt on it, and this is I think around this is half a cup. ये आधा cup दही था और मैं थोड़ी सी अपनी इमली की chutney डालूंगी. I'm just gonna put some of the imli chutney that I have. That is a tamarind paste. और मैं पूरे पे इसको डाल दूंगी, and I'm just gonna drizzle it everywhere. But you can choose how much you want to put. I'm not a big fan of it, so I'm just putting a little for taste. तो अब मैं अपना coriander ले रही हूँ और इसके ऊपर पूरा डाल रही हूँ. I'm just gonna take my coriander and put it on. और अब मैं अपने green chilies डालूंगी. I'm just gonna put my green chilies now. इस पे मैं दोबारा क्योंकि जैसे मैं मेरी फैमिली और मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं खाती तो मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ. और मेरा चाट मसाला and some chaat masala. I'm just going to sprinkle it on. और ये है हमारी कटोरी चाट तैयार. And there you have it. Your katori chaat is ready. Looks amazing. It's colorful. It's literally all you can want in an amazing katori chaat. So there you have it. There you have it. Your katori chaat is ready. आपकी कटोरी चाट हो गई है तैयार और ये बहुत अच्छी है. और अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करें ऐसी आपकी लगनी चाहिए. And if you followed along, this is what it should look like, and it is amazing. And like even the crust, it's so crunchy, and you can see the golden brown color, and then the filling, it's just like amazing. It's all you can wish for in a chaat. और ये बहुत मज़ेदार लग रही है. और अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं. इस वीडियो को बिग thumbs up दें. अब मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें. Bye. So guys, if you like this recipe, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe and share my videos. Bye.